Hello friends, today we are starting business statistics and research methods subject. So business statistics. The statistics when we are applying in our business is simply called business statistics. This is called applied science. Applied, we apply some measurements here. As first of all, we are taking here the measures of central tendency. Statistics is assumption based. This is not a particular science. Okay. So measures of central tendency. Central tendency, it means the central values, main values we are need to find. What measures of central tendency are? Facilitating quick data analysis. If we are analyzing any data, then we can get frequent results. We can get results very easily with the help of these measures of central tendencies. And what we do here, we find single, representative and central value of a data set. Data set, it means data cluster point. If we have 100 points in our data, then where the most data is clustered, this we need to find with the help of measures of central tendencies. Basically, there are three common types of these measures of central tendency: mean, median and mode. Mean is represented by x bar, median by m and mode is by z. So mean again we have three kinds of mean, three types: arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Mean करता क्या है? It equally represent all data points. All data sets are taken up here and it is a mathematical calculation. Mathematically calculate करते हैं हम in the mean. So it is called a mathematical average. Second, we are coming to median. Median is what? Median is the middle value of an orderly data set. Orderly data set, it means if our data is scattered, it is not in order. So first of all, we convert that data into order in ascending or descending order. Then the middle value, the 50% value, the value which lie exactly in the middle is called the median, and it is used on ordinal scale. Ordinal scale, nominal scale, this we will see here. Now the third point is mode. Mode, which we represent by Z, and this we do on nominal scale. And what mode is? पूरे डेटा सेट में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, the most common point, most frequent point, that is called as mode. Now let's come to here. Before calculating the central measures, we must know that what kind of data we have, because on the basis of those data only we can decide that which measure should be applied. ओके, कौन सा मेजर हमें अप्लाई करना है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डेटा सेट का टाइप क्या है. तो डेटा are basically, we are dividing it into two parts: qualitative, quantitative. Qualitative, it means quality, numerically we are not measuring it. Quantitative, it means numerical measures are possible. So qualitative, there are again two types: nominal and ordinal data. What nominal? Nominal मतलब नाम मात्र का. So here categories we are taking. For example, gender, male, female. तो genders हैं इसमें. genders को हम numerically नहीं decide कर रहे, हम इसको कैटेगरी में डिसाइड कर रहे हैं. देन ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल इट मींस अगर हमारे पास रैंक्स दी हुई हैं तो दैट डेटा इज ऑर्डिनल. यहाँ भी हमने लिखा था दैट इज ऑर्डिनल एंड दैट इज नॉमिनल स्केल. सो रैंक में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आप रैंक दे सकते हो. फर्स्ट नंबर को गोल्ड, सेकेंड को सिल्वर, थर्ड को ब्रॉन्ज. तो ये हमारा ऑर्डिनल स्केल हो गया. Now coming over here, quantitative. Quantitative, it means mathematical calculation. So discrete and continuous we have. In discrete, these are countable. Integers, full values we take, but in continuous they are measurable, and in decimals also these are possible to measure. For example, height. Height can be measured in decimals. Okay. Again we have three more types of data sets: interval data, ratio data and primary and secondary data. So interval, it means intervals, equal time intervals पे अगर कोई चीज आ रही है, but main point is here, these are no true zero sets. No true zero, it means अगर temperature
मैं कह रही हूँ कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि 0 मीन्स नथिंग, नल, कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो होगा, तो इसको हम नो ट्रू जीरो, जीरो है लेकिन ट्रू नहीं है, ओके। देन रेशियो, रेशियो में ट्रू 0 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 0 है, कि अगर इस मार्कर में इंक है या नहीं है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल नहीं है तो 0 है, तो वी कैन टेल कि ये जो रेशियो डेटा का हमारे एग्जांपल है। एंड द लास्ट वन इज हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा हमारे फर्स्ट हैंड डेटा होते हैं, रॉ डेटा होते हैं, एंड सेकेंडरी जो प्राइमरी से कॉपी किए जाते हैं या फिर किसी और ने ही पहले से जो डेटा ले रखे हैं उनको, उनके बाद उनकी हेल्प से जब हम कोई भी कैलकुलेशन मेजरमेंट्स करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए ये मैंने इतना ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल इलैबोरेट दीज पॉइंट्स, दैट मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन को, मोड को, एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू।